So today we will learn about divisibility test. So why it is needed to study means it is very important while you are finding the factors of given number to understand how many factors that number has. For that purpose, we need some of the important divisibility rules. Let's check it out first. So here some of the divisibility tests are given. Here are the rules and by which number we want to divide. So if you want to divide by 2, whether that number is divisible by 2 means what was the rule? If the digits at one's place is 0 or 2 or 4 or 6 or 8. इसका मतलब ये होता है किसी भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता या नहीं होता चेक करने के लिए दिए गए नंबर के लास्ट जो वंस के प्लेस के ऊपर जो डिजिट रहेगा या तो वो 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से कौन सा एक अगर रहे तो भी वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए 28, 40 and 218, 3000, like many examples we can write. Now check the numbers at the last digits. So here it is 8 and here it is 0, 8 and 0. Similarly 422, 1056. So at the last digit it is having 0 or 2 or 4 or 6 or 8. So this is how the divisibility rule by 2 works. Next rule by 3. Whether the given number is divisible by 3, what was the rule means if the sum of the digits is divisible by 3, then the whole number is also divisible by 3. How means for example दिए गए नंबर में सारे डिजिट्स का प्लस निकाल लेना, सम निकाल लेना. अगर सम जो आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर दिया गया पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. लेट्स चेक इट आउट. फॉर एग्जांपल्स 111. Now add the digits of these number, that is 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. So 3 is divisible by 3. That's why this whole number 111 also divisible by 3. Let's check another number. So I am writing 201006. Okay, 2,01,006 number is there. Now add these numbers. 2 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 6. 2 plus 0, 2 plus 1, 3. 3 plus 0, 3. 3 plus 0, 3. 3 plus 6, 9. So now this 9 is also divisible by 3. That's why 2,01,006 also divisible by 3. So how it works? Okay. So by 3 का rule क्या है? So if the sum of the digit is divisible by 3, then the whole number will also divisible by 3. For example 4 and 5, 45 is there. Okay, so now add the digits, you will get 4 plus 5. So 4 plus 5 how much? That is 9. So 9 is also divisible by 3 now. So that's why 45 is also divisible by 3. Let's check it out. Divisibility rule by 4. If the number formed by last 2 digits is divisible by 4 or last 2 digits are zeros, means that for example they given some number like take an example of 208. Okay, so now last 2 digits are 0 and 8. 0 and 8 forms 8, right? तो ये 8 हो जाएगा. अगर ये लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होने वाले तो ये पूरा 208 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अब ये 8 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा. 4 1 जा 4 2 जा, राइट? सो नाउ यहाँ पे अब ये 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, तो 208 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल टेक अनदर वन, 800 इज देयर. टेक लास्ट 2 डिजिट्स. अगर आप लोग लास्ट के दोनों डिजिट देखेंगे यहाँ पर 0 है, तो 0 का मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 0 रहा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब ये है दिए गए नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स आपको चेक करने हैं. अगर दैट दोज 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज दोज 2 डिजिट्स आर 0, देन द होल नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 4. अंडरस्टूड? लेट्स चेक इट आउट. डिविजिबिलिटी बाय 5, 6. Let's check the divisibility rules for 5, 6, 9 and 10. First of all 5. So a rule is if the digit at one's place is either 0 or 5. इसका मतलब क्या है?
दिए गए नंबर में लास्ट डिजिट चेक करना है आपको, अगर वो 0 या फिर 5 रहेगा देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. फॉर एग्जांपल देखिए 25, 100, 2155, 3765. सो लास्ट डिजिट देखिए आप लोग, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5. देन these four numbers are divisible by 5. Okay, so now by 6 rule is if the number is divisible by both 2 and 3 it is compulsory. मतलब दिए गए नंबर में अगर वो नंबर 2 से भी और 3 से दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, अगर दोनों से भी डिवाइड हो जाएगा देन दैट नंबर विल आल्सो डिविजिबल बाय 6. फॉर एग्जांपल देखते हैं 102 is there. Okay, so now the check by 2 and by 3 rules first. by 2 by 3 दोनों चेक करेंगे, अगर ये दोनों भी डिवाइड हो गए तो ये 102 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. by 2 rule is last digit it is having 2. Okay, means it is going to be definitely divided by 2, right? So what is the rule by 3? That is add the digit. If the sum is divisible by 3 then that whole number will also divisible by 3. 2 से तो डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट 3 से चेक करते हैं 1 plus 0 plus 2. Okay, now add 1 plus 0 that is 1 plus 2 that is 3. अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, then 102 is going to definitely divide with 3. इसका मतलब 102 is divisible by both 2 and 3, hence this 102 is also divisible by 6. Okay, understood? Next, check by 9. If the sum of digits is divisible by 9 means you have to find the sum of given numbers digit. So for example take 603 is there. Am I right? 603 means add the digits. So when you are adding digits, now take 6 plus 0 plus 3. Okay, so now add 6 plus 0 that is 6 and 6 plus 3 9. So 9 is divisible by 9 only na. So definitely 603 is going to be divisible by 9. Okay, so now take another example. For example 54 is there. Okay, so 54, now add 5 and 4 digits. So that is 5 plus 4. Now 5 plus 4 how much? 9, means it is divisible by 9. That's why 54 is also divisible by 9. Understood? So this is what the by 9 rule says. If the sum of digits is divisible by 9 then that whole number will also divisible by 9. Last, very simple, by 10. If the digit at one's place is 0, इसका मतलब ये है दिए गए नंबर में लास्ट डिजिट चेक करना है आपको. अगर लास्ट डिजिट पे 0 आएगा then the given number will going to be definitely divisible by 10. आप example लिखते हैं. For example, right now example, what is that example? So now I did 20, take 100, 350, 4780, 8110. You take any example but condition is last digit should be 0, right? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट के सभी डिजिट यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, रीड divisibility rules definitely and compulsory because divisibility rules are going to you help to find the factors. While finding the factors it will be helpful to you guys. Okay.